हाँ I would like to pay my thanks my sir and ma'am. We have a golden opportunity to say few word about our project. Our project is online camera system, and now can Vishal explain further. Thank you, Steve, for inviting me. First of all, I would like to thank all the faculty members who give me the opportunity to present a little presentation in front of my faculty. So, I will tell you a story of my life which is related to this project. When I was going towards Delhi and suddenly there was a problem occurred in my mind, and I couldn't find any garage nearest my location. And then an idea clicked on my mind. So why not we have to make a project assessing information and getting service on your fingertips. तुम्हें अपनी उंगलियों पर ही अपनी चीजें मिल जाएगी, तुम्हें ज़्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. Accessibility to the next and nearest serviceman. जो भी तुम्हारे नियरेस्ट कोई भी सर्विसमैन होगा वो तुम्हारे पास खुद चल कर आएगा, ना कि तुम्हें खुद जाना पड़ेगा. सर्विस कम्स टू यू. जो भी सर्विस है तुम्हारे पास खुद आएगा. What is the objective of our project? The main objective of online automobile service provider is to make the customer armed with his pocket knowledge. जो एक एम है हमारे प्रोजेक्ट का, हम चाहते हैं कि जो भी चीजें हो यूजर्स की पॉकेट में हो, उससे ज्यादा एफर्ट करने की. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहता हूँ कि मेन ऑब्जेक्ट क्या है हमारा प्रोजेक्ट का, कि यूजर को कुछ भी ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, उसे सब कुछ बिना मेहनत के मिल जाए. तो so he can feel free to travel anywhere without the tension of non-availability of the garage. और वो कहीं भी जाए उसके माइंड में टेंशन ना हो कि मेरा अगर बाइक खराब हो जाता है तो मुझे उसे पैदल चला के ले जाना पड़ेगा या फिर टाइम मेरा खराब हो जाएगा. इस चीज़ की डिफिकल्टीज उसके माइंड में नहीं आनी चाहिए. ये हमारा एम है. Then the other objective of online automobile service provider are to allow the service centers and garages to provide their service through web also and make them spread their business over the web. और दूसरी चीज ये है कि जो सर्विस सेंटर्स है, जो गैरेज सर्विस सेंटर्स है, वो जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं थ्रू इंटरनेट कर रहे हैं. और थ्रू इंटरनेट क्यों कराएंगे? क्योंकि थ्रू इंटरनेट ही आजकल सारे काम होते हैं और इजीयर तरीके से होते हैं. और हम चाहते हैं कि ये बिजनेस ऑल ओवर द वर्ल्ड चले, ऑल ओवर द इंडिया चले, ताकि लोगों को और ज़्यादा अपनी लाइफ में इजियर और हैप्पियर चीज़ें आनी चाहिए. Must be database driver so that customer can keep the track of the service provider and vice versa. हमारे पास एक database also available होगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी कस्टमर हो या मैकेनिक हो उसका एक database बने, ताकि पता चल सके कि किस बंदे ने क्या करना है. मतलब हम चाहते हैं कि उसका सारा इन्फॉर्मेशन एक डेटा पर रिकॉर्ड करके रखें. तो हमने इसमें database अवेलेबिलिटी भी दी है. What is the scope of our project? It deals with all kinds of service for the vehicles the service center is providing. ये सारी जो भी सारी सर्विस प्रोवाइड करेगा जो एक व्हीकल को चाहिए होती है, जो एक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स को चाहिए होती है. All the automobile service centers and garages can join the community to provide their service to the customer. जो भी गैरेज सिस्टम होगा, जो भी गैरेज सर्विसमैन होंगे, उनका एक ग्रुप होगा, वो सब एक साथ ज्वाइन होंगे और हमारे इस प्रोजेक्ट को आगे ले जाएंगे, जो कि बेनिफिशियल होगा कस्टमर के लिए. Then also this helps to the service provider in spreading their business worldwide. और ये हेल्प करेगा बिजनेस में भी, ये हेल्प करेगा ताकि उसका जो ये प्रोजेक्ट है ऑल ओवर द वर्ल्ड चल सके. It can be used anywhere and it will provide all the garage and service center in the vicinity of the customer. ये जो हमारा गैरेज सिस्टम है ये हमें हर तरह की फैसिलिटी देगा ड्यू टू द टूल्स, ड्यू टू और भी सारी चीजें जो फीचर्स होते हैं हमारे व्हीकल्स के, उसमें भी हेल्प करेगा. Also provide the map facility which gives the convenience to both the client and the service provider to locate the destination point. इसमें हमने एक मैप और लगा के रखा है जो कि लोकेशन के लिए होता है, जो कि जो यूजर की और मैकेनिक जो भी मैकेनिक होगा उसकी लोकेशन को ट्रेस करेगा. System structure and Rahul will continue this. That server we used the exact
ready with the browser. Language is used PHP, SQL, HTML, and JavaScript. Introduction. Some languages are PHP is a hypertext preprocessor, which is used for client-side pages. MySQL is a database language. It is a structured query language. HTML is used for front end, and CSS is also used for front end, and JavaScript is used for dynamic programming. Here's some screenshots of our project is. This is the home page where we can redirect to join for a mechanic, join for a vehicle user, and about us, our team, and for vehicle user login and mechanic login. This is also a screenshot of our home page. And here we go for user sign up and login page. Here a user can create their account by filling their details and then log in to their account to show the garage nearby, and then it's a database table. It's a table. Sign up for mechanic and log in. Here a mechanic can create their account by providing their details and then log in. This is a database table for the mechanic. And this is our team. Rahul Singh Rana, Vishal Devan, Ankit Rana, and Mr. grateful to all of you for giving us a